Hello my dear students, once again we are going to solve few more problems on the topic stresses in the bars of different sections. Our question says like this: a member formed by connecting a steel bar to an aluminum bar as shown in figure. See, here is one figure. One steel bar is connected to one aluminum bar, understand? Assuming that the bars are prevented from buckling sideways, calculate magnitude of force P. We have to calculate the magnitude of force P. One force is applied from the top now. This is magnitude. We have to find the magnitude of this force P. Understand? That will cause the total length of the member to decrease 0.25 mm. That means this force, we don't know, this is unknown force. So this force will cause decrease in length of total member as 0.25 mm. That means extension of the member is 0.25 mm or change in length of the member is 0.25 mm. The value for elastic modulus for steel and aluminum are 2.1 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square and 7 into 10 to the power 4 Newton per millimeter square respectively. That means here two value of Young's modulus are given. First one is for steel bar and second one is for aluminum bar. Already I told you my dear students, actually Young's modulus values varies according to the material. So here for steel bar it is given as 2.1 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square and for aluminum bar it is given as 7 into 10 to the power 4 Newton per millimeter square. एक बार फिर से आप सभी को हम हिंदी में क्वेश्चन को रिपीट करेंगे. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोलता है कि हमारा दो चीज से मिलकर एक मेंबर को हम बनाए हैं. एक है स्टील का बना हुआ रड और एक है अल्युमिनियम का बना हुआ रड. दोनों को मिला के एक चीज हम लोग बनाए हैं. और क्या बोलता है कि इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक लोड अप्लाई हो रहा है ऊपर से, उसका हमको मान ज्ञात करना है. लेकिन आपको साथ में क्या कह रहा है कि इस फोर्स के द्वारा इसमें फोर्स डालेंगे ऊपर से तो क्या होगा, ये दबेगा ना. ये दोनों चीज मेंबर हमारा दबेगा. ये हमारा जो मेंबर जो बना हुआ है दोनों चीज, ये जो दो डायग्राम हमारा जो बना हुआ है ये वाला चीज, ये क्या होगा मेरा दबेगा. और ये कितना दबेगा, 0.25 mm दबेगा. मतलब उसके लेंथ में चेंजेस आएगा, कमी आएगा. कितना कमी आएगा, 0.25 mm का कमी आएगा लेंथ में. और क्या बोलता है कि यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू है E का वैल्यू, मतलब स्टील बार के लिए अलग दिया गया है, कितना 2.1 into 10 to the power 5 Newton meter 2.1 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square और अल्युमिनियम के लिए 7 into 10 to the power 4 Newton per millimeter square. ये हमारा दिया गया है, समझ में आ गया. और इसी को यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एक दो चीज और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमको. देखिए लेंथ भी दिया गया है. पहला जो हमारा मेंबर है उसका लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दूसरा का हमको दिया है 38 सेंटीमीटर. और देखिए एरिया भी दिया हुआ है इनडायरेक्टली. कितना दिया हुआ है एरिया, पहला स्टील बार का 5 into 5 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है 10 into 10 सेंटीमीटर. एरिया भी आपको दिया गया है. तो ये सारे डेटा को यूज करके हमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट एज यूजुअल as we are doing always. First we will write our given data. So first we will start with our given data. Given data. Given data is very important to solve any problem because already I am always telling you nearly 25 to 30% of your marks will be given as per your given data value. Because once your given data value will be correct, then your answer is also going to be correct. Understand? So first we will write our given data value. What are the values which is given? First one 0.25 mm decrease in length is given. That means extension length or change in length is given 0.25 mm. Next things, Young's modulus value is given. Young's modulus value is given. E for steel is given. How much? 2.1 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square. And for aluminum
given as 7 into 10 to the power 4 Newton per millimeter square. 7 into 10 to the power 4 Newton per millimeter square. Anything else? Yes. From diagram many things are given. That means L1 is given for steel 30 centimeter. So L1 is equal to 30 centimeter. So we will convert it into millimeter. So 300 millimeter. And L2 is given for aluminium 38 centimeter. 38 centimeter. So we will convert into millimeter. So 380 millimeter. Understand? Then anything else? Yeah. Area for steel bar is given 5 into 5 centimeter. So area of steel is given 5 into 5 centimeter. So it will be equal to 2500 millimeter square. And area for aluminium bar is also given 10 into 10 centimeter. So area for 10 into 10 centimeter, that is 10,000 millimeter square. Understand? 10,000 millimeter square. 10 into 10 is equal to 100 and millimeter square. Understand? Okay. Everything is given. So we have written the given data from our questions. हम अपने क्वेश्चन से क्या किए, गिवन डेटा को लिख दिए हैं. देखिए क्या क्या गिवन डेटा दिया गया था. सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था, लेंथ ऑफ द मेंबर डिक्रीज जो करा उसका वैल्यू दिया है कितना, चेंज इन लेंथ वाला वैल्यू दिया है 0.25, उसको हम लोगों ने लिख दिया. फिर हमको यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया गया था, स्टील के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग. तो स्टील के लिए अलग लिख दिया हम लोग, एल्युमिनियम के लिए अलग लिख दिए. फिर हमारा जो डायग्राम था उससे हमारा क्वेश्चन कुछ बनता है. क्या बनता है, लेंथ हमारा इसका दिया हुआ पहला का 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिख दिया, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किए तो 300 मिलीमीटर हो गया. दूसरा का लेंथ जो एल्युमिनियम बार का रेड है, लेंथ है कितना है 38 सेंटीमीटर, तो 38 सेंटीमीटर उसको मिलीमीटर किया तो 380 मिलीमीटर हो गया. फिर हमारा एरिया दिया हुआ है, देखिए स्टील बार का एरिया दिया हुआ है इनडायरेक्टली 5 into 5, तो इसको जब हम लोग किए एरिया निकाल कितना हुआ 2500 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया. दूसरा भी एरिया हमको दिया है 10 into 10 सेंटीमीटर, उसको सबको मिलीमीटर में कर रहे हैं, तो इसका हमारा क्या आएगा 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर. ये हमारा गिवन डेटा लिखा गया. अब हमको फाइंड क्या करना है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ओनली वन थिंग. व्हाट वी हैव टू फाइंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P. We have to find the magnitude of the force P due to which the decrease in the member is coming, decrease in the length of the member is coming like 0.25 mm. Understand? So now we have to do our solution. So as we know that, the extension of bar DL, what is the formula of DL? Change in length or extension of total length of the given structure. What is the formula for that one? P divided by E into L1 divided by A1 plus L2 divided by A2. This is our formula for calculating the change in length. But here this formula we will not use. Why? Because Young's modulus for steel is given different and Young's modulus for aluminium is given different. That means Young's modulus for each and every material is different. So we will not use the same Young's modulus value. So what from this formula we can extend our formula. Our formula will become like this. DL is equal to P into L1 divided by E1 into A1 plus L2 divided by E2 into A2. This is our new formula to calculate change in length. Understand?
Using this formula, now we will calculate our magnitude of force. Understand? Magnitude of load now we are going to calculate using this formula. Now nothing we have to do. We have to substitute all the given data or all the things in this formula. Understand? Now we will substitute. So what is the value of DL? DL value is 0.25 mm. 0.25 is equal to P into L1. What is the value of L1? 300 millimeter divided by E1 into A1. What is the value of E1? E1 means Young's modulus for steel. Understand? Or elastic modulus for steel. How much? 2.1 into 10 to the power 5. 2.1 into 10 to the power 5 into A1. What is the area 1 values? Area for steel is 2500 millimeter. 2500 millimeter. Understand? Plus L2. What is the value of L2? 380 millimeter. Divided by E2. What is the Young's modulus for aluminum bar? Here. 7 into 10 to the power 4 Newton per millimeter square. 7 into 10 to the power 4 Newton per millimeter square. Into A2. What is the value of area of aluminum bar? 10,000 millimeter square. Into 10,000. Now we have to solve this equation to get the value of P or magnitude of P. So I will erase this side. You can pause the video or you can note down in your notebook also. Don't worry, I will explain once in Hindi also. So now what we have to do, we have to solve this equation in a simple way. Then we will get our answer as value of P. Understand? So now we are going to simplify this answer. So 0.25 is equal to P into, now we will use our calculator. Please do separately everything. Then your answer will not be wrong. Understand? Okay, first of all 300 divided by 2.1 into 10 to the power 5 into 2500. So we got as 5.71 into 10 to the power minus 0.7, 10 to the power minus 0.7 plus, now we have to solve that one, 380 divided by 7 into 10 to the power 4 into 10,000. So we got as 5.42 into 10 to the power minus 0.7. Now we have to solve these two problems. Now we have to solve these two variables. So 5.71 plus 5.42 is equal to 11.13. So 0.25 is equal to P into 11.13 into 10 to the power minus 0.7. So now what we will do, we will simplify in more simple way. Understand? 1113. So now what we have to do,
Now to find the value of P, magnitude of P, what we have to do? We have to divide 0.25 by this number. So P will be equal to 0.25 whole divided by 0.0000001113. Now put in your calculator 0.25 divided by 0.00000060. 1113. So we got as P value as 2246181.49 Newton. Understand? 2246181.49 Newton. This is the magnitude of the force P. Understand? This is the magnitude of the force P. Once again I will explain in Hindi. हमको क्या करना था, क्वेश्चन हमको करना क्या था, हमको देखिए क्वेश्चन जो दिया गया था उसके अनुसार हमको P का वैल्यू फाइंड करना था। वैल्यू हमको P का फाइंड करना था। तो P का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते थे। क्या फार्मूला जानते थे? ये वाला, चेंज इन लेंथ और एक्सटेंशन इक्वल टू P by E इंटू L1 by A1 प्लस L2 by A2। समझ में आ गया? और एक चीज बता रहे हैं, ये हमारा किसके लिए था? जब सेम टाइप का मटेरियल इस्तेमाल होगा लेकिन सेक्शन मेरा अलग अलग होगा। इसमें क्या हमारा सेक्शन भी मेरा अलग अलग है और सेम टाइप का मटेरियल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसमें क्या होगा, हमारा फार्मूला कुछ वेरी करेगा। सबके लिए यंग्स मॉडुलस का वैल्यू डिफरेंट होगा, सब मटेरियल के लिए। तो क्या हो जाएगा? P इंटू L1 डिवाइडेड बाई E1 इंटू A1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू A2। समझ में आ गया? मतलब मेरा यंग्स मॉडुलस का वैल्यू डिफरेंट है, स्टील के लिए भी मेरा डिफरेंट है और एल्युमिनियम के लिए भी मेरा डिफरेंट है, इसीलिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किए हैं। और जब भी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, इसका वैल्यू हमारा ऑलरेडी सब चीज का पता था, केवल P का वैल्यू नहीं पता था, क्योंकि P का वैल्यू फाइंड करने के लिए ही हमको क्या दे दिया था? DL का वैल्यू ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे दिया गया था, इसलिए हम लोग सबका वैल्यू डाल के P का वैल्यू फाइनली हम लोगों ने फाइंड किया। हमारा इतना P का वैल्यू आया। मतलब ये जो मेरा मेंबर है इस पे इतना का लोड पड़ रहा, इतना न्यूटन का लोड पड़ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? 0.25 क्या हो रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है लेंथ में। ये मेरा जो ओरिजिनल लेंथ था उसमें से 0.25 mm डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये था मेरा आज का क्वेश्चन। समझ में आ गया? आपको उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।